Hello viewers, welcome to Fonda Clear Coaching. Today we will learn about Roman numericals. I will make you learn about the Roman numericals in such a way that you can write any number in Roman numericals. I will make you learn from the root level of Roman numbers. Now let us start our lesson. Roman numbers consist of 7 symbols. Roman numbers consist of 7 symbols. रोमन नंबर में 7 सिंबल्स होते हैं. What are the symbols? These symbols are 7 alphabets of English. Among the 26 alphabets, 7 alphabets represents some values, some numbers. Each of the symbol represents a number value. रोमन नंबर में हम जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिए हैं वो सब एक एक नंबर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. सिंबल्स एंड वैल्यूज. नाउ लेट अस लर्न व्हाट आर द सिंबल्स एंड व्हाट आर द वैल्यू ऑफ दो सिंबल्स और व्हाट वैल्यू दो सिंबल्स represent. First of all, the symbols are I, V, X, L, C, D and M, and the values stands for or represent. For I, the value is 1. For V, the value is 5. For X, the value is 10. For L, the value is 50. For C, the value is 100. And for D, the value is 500. And for M, the value is 1000. Now we will learn up to 1000, and after it we will learn above the number of 1000. So I have written 3 symbols and the representing numbers, number values, that is V, L and D, in red color, because these 3 numbers or these 3 symbols have some special rules. About that I will tell you later in our lesson. So first of all, let us discuss some facts and rules of Roman numbers. रोमन नंबर्स के कुछ सच या फैक्ट या फिर हम बोल सकते हैं रूल्स होते हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. देन द नंबर 1 rule is combination of symbols. Okay, combination of symbols. What it means? It means when we write a smaller number or symbol, हम इसको नंबर बोल सकते हैं, सिंबल भी बोल सकते हैं, after or right to a larger number, that indicates an addition of symbols. जब हम कोई छोटा नंबर या छोटा नंबर वैल्यू का सिंबल एक बड़ा नंबर या नंबर वैल्यू का सिंबल के राइट साइड में, दाहिना साइड में या फिर नंबर के बाद हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वहाँ एडिशन है. एडिशन मीन्स नॉट द ऑपरेशंस बट द राइटिंग प्रोसेस ऑफ द नंबर. आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. टेक सम एग्जाम्पल्स. वी राइट VI. V stands for 5, I stands for 1. So when we write VI, the smaller number is written right to a larger number. So here it means
V plus I, that means 5 plus 1, that is 6. When we write Lx, L stands for 50, X stands for 10, then it is L plus X, or 50 plus 10 is equal to 60. When we will write X double I, that means 10, X stands for 10, plus 1, that is 12. When we will write DC, D stands for 500 and C stands for 100, so 500 plus 100, that is 600. So like this, when we write a smaller number or symbol right to a larger number, that means an addition. Again, when we write a smaller symbol or number before or left to a larger number, that indicates a subtraction of symbols or numbers. अगर हम कोई छोटा नंबर या सिंबल कोई बड़ा नंबर के लेफ्ट में लिखते हैं या उससे पहले लिखते हैं तो सब्ट्रैक्शन इंडिकेट करता है. जैसे आई भी, आई इज ए स्मॉलर नंबर, भी इज लार्जर नंबर. सो हियर भी minus I is equal to 5 minus 1, it is 4. Ix, that means x minus I, 10 minus 1, 9. XL, that means L minus x, 50 minus 10, 40. When we write XC, that means C minus x, 100 minus 10, it is 90. Again, for CD, it is D minus C, 500 minus 100, it is 400. So, when we write a smaller number prior to or left to a larger number, that indicates a subtraction. Now, the second rule is repetition of symbols. Repetition, उसको repeat करना. Repetition of symbols indicate addition of them. अगर कोई सिंबल को हम रिपीट करते हैं तो उसे एडिशन ही माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई, दैट मीन्स 1 plus 1 plus 1, that is 3. C, that means 100 plus 100 plus 100, 300. M, that means M plus M, 1000 plus 1000, that is 2000. M, that is M plus M, that is 1000 plus 1000 plus 1000, it is 3000. Now it is clear that when we repeat a symbol, that means addition, but there are some rules that we cannot repeat all the symbols. हम सब सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते, और we cannot repeat a symbol or number more than 3 times. सब सिंबल को हम रिपीट नहीं कर सकते, और जिसको हम रिपीट कर सकते हैं उसे भी हम सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं. We can repeat it up to 3 times. We cannot repeat it more than 3 times. Now, here is a list of repeatable symbols. कौन सा सिंबल को हम रिपीट कर सकते हैं और कौन सा सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते हैं. नॉन रिपीटेबल सिंबल्स. रिपीटेबल सिंबल्स आर I, X, C and M, that is 1, 10, 100 and 1000. And non-repeatable symbols are B, L and D, that is 5, 50 and 500. Here I will tell you one thing, that I have written these 3 numbers in red colors in the symbols and value list. So these 3 numbers B, L and D, 5, 50 and 500 cannot be repeated. ये एक बार भी 2 बार भी रिपीट नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, not more than once. Now let us take some examples. I, double I, triple I is a valid number 1, 2, 3, but 4 times I is invalid.
Okay, x, double x, triple x, 10, 20 and 30 ये वैलिड नंबर है, बट 4 times x is invalid. We cannot say it 40. X plus x plus x plus x, we cannot say, it is invalid. C, double C, triple C is valid number, but 4 times C is invalid. M, double M, triple M is valid number, but 4 times M or 5 times M are not valid numbers. Like so, we cannot repeat these numbers. That means we cannot write double V, triple V. We can write only V, L and D. For once, एक टाइम के लिए हम लिख सकते हैं, बट वी कैनॉट राइट डबल V और ट्रिपल V, डबल L और ट्रिपल L, डबल D और ट्रिपल D. These numbers are invalid numbers. Okay. If I will go further, then the video will be too lengthy. So I think today we should learn this much. After this, in my next video, I will make you learn about the subtraction rules of the Roman numbers